अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2। आज के वीडियो लेक्चर में खुश आमदीद। अगर आप अपना समर पैक पेज नंबर 6 पर खोलें तो आज की हमारी असाइनमेंट है, हमें वर्ड्स मीनिंग सॉल्व करने हैं द रेनबो के। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, पहले रेनबो को, इसको ट्रांसलेट करें, अपने पेरेंट्स एंड ट्यूटर्स की हेल्प लें। इफ़ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन लीव अ मैसेज इन व्हाट्सएप ग्रुप एंड फॉर द मीनिंग्स यू हैव ऑलरेडी सॉल्व देम ऑन योर नीट नोटबुक्स. You can copy them from video lecture 2. Like the first one here, bow says, the meaning for bow is curved like an arch. Curved, 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 like arch, arch, arch. Now for the sail, means to travel in water, to travel in water. And overtops means over the top of something, over top of something. And for the next one, across means through, THROUGH. I'm sorry, this T will be small. And birds mean constructs or makes. And make sure that your work is in neat and clean handwriting. Unlike me, you can draw lines here and write them in a sequence. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो लेसन से रिलेटेड या प्रीवियस लेसन से रिलेटेड, या अगर आपके लेक्चर्स मिस हो गए हों तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज छोड़ सकते हैं। एंड आई विल जस्ट गेट टू दैट। अंटिल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।